वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 24 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम के 12वें दिन के आज के इस प्रथम सत्र में मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, ईश्वर शरण पीजी कॉलेज, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस सत्र के विशेषज्ञ वक्ता के रूप में हमारे बीच हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हरीश के ठाकुर सर इस आभासी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर ईश्वर शरण पीजी कॉलेज, प्रोग्राम कन्वीनर डॉक्टर अपना पांडे मैम एवं प्रोग्राम को कन्वीनर डॉक्टर उदय सिंह की तरफ से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। शिक्षा जगत में आपकी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। आप लगभग 30 सालों से अध्ययन एवं अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपकी 15 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न शोध अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में आपके 100 से अधिक रिसर्च पेपर एवं आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। आप कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुके हैं। उसमें से कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से आपने जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के अनुभविक अध्ययन किया है, उसका विश्लेषण किया है। वर्तमान समय में सर आप सेंटर फॉर कैनेडियन स्टडीज के डायरेक्टर एवं राजनीति विज्ञान विभाग के साथ साथ डिफेंस स्टडीज विभाग के चेयरमैन के पद को सुशोभित कर रहे हैं। सर, यह हमारा सौभाग्य होगा कि आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं और आप अपने व्याख्यान के माध्यम से उन तमाम अनुभविक अध्ययनों एवं पहलुओं को हमसे साझा करेंगे, जिससे भविष्य में हम सभी प्रतिभागियों को शोध के क्षेत्र में बहुत ही सहायता एवं मदद मिलेगी। सर, मैं आपको अब आमंत्रित करता हूं। प्लीज सर, ज्वाइन अस एंड एनलाइटेड अस। Thank you, Vedji. वेलकम सर। I think I am audible. यस सर। First of all, I congratulate Professor Anand Shankar ji, Manoj Kumar Dubey, and Amita Dubey ji, who are the primary members of the carrying out this orientation program of Ishwar Saran PG College, Allahabad. And convener Uday Pratap Singh ji, who has been in constant touch with me regarding the program, since we have a busy schedule and research methodology as such has not been my area of deliverance for decades. But very recently, during the COVID time, I got the opportunity that I should share my research experiences and my research activities over the decades with the students. So when I came across certain volumes, I found that I have lots of literature with me that I prepared as notes. It was more than 5,000 words. So I thought that I should go with this small manual or handbook that should be helpful to students of MPhil and PhD and other research seeking people. So I went for that, and it was 3 months exercise, and that 7,000 words volume turned out to be a volume of 50,000 words, and I converted it into a book. It has been published by Corporate Publishers, New Delhi, and you can Google it. It is available on Flipkart also. I'm not here to propagate about the volume, but this is how my interest in going for discussions over research activities and going for the discussions and debates and different issues we are engaged with while discussing research and what does it mean and what does it carry for a researcher, how does it different from normal knowledge. I would like to prefer the term worldview instead of the term paradigm or the term that has been epistemology and ontologies, which have been used differently by different scholars. But before I come to the primary steps of research, the formulation of research problem and the consequent steps, which is a systematic
way of going for a research activity, I would like to go into history, because what I have witnessed with many speeches and with many deliverances in different programs that I have come across, I have found that people are more interested in telling the world that research is something that associates with modern world only. Otherwise, in traditional societies or in the earlier societies of early stages, the element of research was not there. So I have objection against that view. And if we take the Oriental point of view regarding this, because सर हरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट कर लें। जी जी अब ठीक है जी। हाँ हाँ सर। ओके सर हमारे जो ओके पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो अगर बाइलिंगुअल रहेगा तो इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा सर। ओके सर, ओके सर। तो मैं जो अभी तक लेक्चर्स में आई हैव फाउंड प्रॉब्लम्स, जिसमें मुझे नजर आता है कि भाई एक जो हमारे स्कॉलर्स हैं और वेस्टर्न ओरिएंटेड स्कॉलर्स हैं, उनका जो एक बेंट ऑफ माइंड है वो बेशक वो अभी के डेकेड्स में ये आर्गुमेंट ज्यादा आई है कि भाई मैकुलाइट काइंड ऑफ थिंकिंग और कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग जो है, जो एजुकेशन सिस्टम है, आउट ऑफ दैट वी हैव cropped up the new generations and they are unaware of our past. I will take you to the 6 schools of Indian philosophy. You must have heard about that. I got the opportunity to study philosophy at college level, and I came across that it is the Hindu religion or the Hindu word has nothing to do with India. It is a long and huge and vast Sanatan tradition. And it has 6 schools: the Vaisheshik, the Sankhya, the Yoga, and the Nyaya, and two more, and then sub schools like Charvak. So how these relate to research, that when we go for the positivist argument in Europe, जो कॉम्टे के साथ शुरू होता है, और जहाँ पे साइंटिसाइजेशन का आफ्टर रेनेसां, और जिसको कि हम पुनरुत्थान का युग बोलते हैं यूरोप में, जिसके बाद की एक वहाँ पे नया वैज्ञानिक चिंतन आरंभ होता है, तो वो चिंतन भारतीय वैचारिक परंपरा में बहुत प्राचीन है। ये ग्रीक परंपरा में भी रहा, लेकिन क्या होता है कि समय के साथ जो एक डोमिनेंट नैरेटिव समाज में चलता है, जो कि वेस्टर्न डोमिनेंट नैरेटिव चला, और जो एशियन जो था आपका, या ओरिएंटल वर्ल्ड जो था, जिसमें पीछे चलता गया, और इंडस्ट्रियल के बाद बहुत परिवर्तन आया, और एक जो एक अपसाइड डाउन वाली स्थिति ओरिएंट के लिए आई। तो उस चिंतन में अगर हम देखें तो ग्रीक्स से पहले अबाउट 8th सेंचुरी बीसी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वक्त हमारा एक न्याय जो स्कूल है, न्याय सिंपली मीन्स रूल्स एंड मेथड्स एंड लॉज ऑफ गवर्नेंस। सो एक हमारा जो मिथिला यूनिवर्सिटी भी थी, दैट वाज वेरी फेमस फॉर न्याय टीचिंग, और 8th सेंचुरी बीसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो चिंतन था, और याज्ञवल्क्य, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन फिलोसफी आल्सो, उस वक्त का जो चिंतन था वो इतना सिस्टमैटिक था कि अगर मैं न्याय से आपको कुछ एक चीजें कोट करूंगा, क्योंकि एज उदय भाई एज डायरेक्टेड मी यस्टरडे के भाई मेथोडोलॉजी और ये जो रोज की चीजें हैं कॉमन, वी आर गेटिंग बोर्ड विद, ब्रिंग समथिंग न्यू। तो आई थॉट दैट आई शुड ब्रिंग द इंडियन फिलोसॉफी एंड द डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड विद द रिसर्च मेथोडोलॉजी इनटू डिस्कशन। सो जो न्याय स्कूल है उसमें आपके 4 बातें, हाउ देयर आर 4 मीन्स, although Vaisheshika discusses 6 means of attaining knowledge, Nyaya speaks of 4 means of gaining knowledge, and these 4 means are perception, inference, comparison, and shabda. Perception, these are the current research is primarily based on logic of inference,
and that inference can be deductive as well as inductive. So I am relating this induction and deduction of research component with the Nyaya school that speaks about the primarily 4 ways of gaining knowledge. One is perception. This is purely deductive approach or the objective approach, when we find that the knowledge has to be gained from the external world, from the other, from with our sensory organs. और इसको जो नया स्कूल में बात की है कि प्रत्यक्ष, ये जो प्रत्यक्ष साधन हैं जिनसे कि हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं. दूसरा इन्फ्रेंस है, अनुमान. अनुमान लगा करके जो हमारा इंडक्टिव अप्रोच है. इंडक्टिव मीन the question arises from the sample and then it goes to the society or the territory to which you are applying that sample. This is the bottom up approach, and the deductive approach is top down approach. That's how our Nyaya school is related with the logic and the inference methods of current discussions in research methodology. Then there is one interesting, the third method that is of that is very significant in getting scientific knowledge and in getting the exact knowledge about the different phenomena around you, and that is a comparison, जिसको कि नए स्कूल में उपमान कहा गया है कि तुलनात्मक विधि हम आज यूज करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट इन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, और इन सोशियोलॉजी व्हेन यू कंपेयर कम्युनिटीज और द हैबिट्स ऑफ द कम्युनिटीज और the ethnic properties take place, तो उपमान की बात न्याय स्कूल वहां पे करता है. और जो चौथा है वो शब्द यूज करते हैं, शब्द और वर्ड, जिसको कि आज के समय में आई वुड प्रेफर टू call it the science of hermeneutics. Hermeneutics, we all know that the individual and the other, and how individual perceives the other. जो outside world है, जो external है, आपकी perceptions क्या हैं, and those perceptions vary from individual to individual, and accordingly the interpretation of the other, the interpretation of the object varies from individual to individual. So the current critical theorists also, you must have seen, they are against the dominant narratives. They are against the scientific method even. The critical theorists, I will come to this point later on, they are willing to, they are not willing to, I would say they have this primary objective that they disagree with the scientific method. The scientific method very simply because you can apply scientific method to objective things. You can apply scientific method to external things, but the application of scientific method on human subjects who are having an internal world, who are having the internal mental processes, who are having the internal intellectual domains. So the application of this scientific methodology to human mind is objectionable because it will not bring out the proper understanding of the mental plane of a human or of a community. So the critical theories हैं, वो मैं उसमें बाद में आऊंगा कि भाई वो कैसे broad जो scientific understanding है चीजों की, उससे भी एक अलग सोच रखते हैं, उससे भी एक डिफरेंट नजरिया रखते हैं, और वो कहते हैं कि जो साइंस ने आपको एक डायमेंशन दिखाई है, अगर आप अंग्रेजी साहित्य के भी लोग होंगे तो उन्होंने ये अपने, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, नॉट मैस्लो, he speaks about the image and the mirror and how that image is distorted. What we see is not actually there. The different dimensions, if you are looking at the right dimension, that is left according to mirror. So that image representation is not true. So I will come to now primary causes, why research becomes fundamental. This was one segment that historically the research or the process of human thinking is very old,
and the whole literature, the Vedic literature, if we see the Kautilyan Arthashastra, it is based on content analysis. It is not a single volume as it has been debated. There are several authors to Arthashastra, though there is no unanimity over the view, but in between, in the volumes, when Kautilya discusses different names and different rishis about how to manage the state, about how to generate the revenue. So he is following a way that is called content analysis, or a very strong historical approach and a narrative approach, which is fundamental to social sciences. So now I would come down from the Indian historicity of research through the Greeks. As we all know that Aristotle went for the comparative method that was mentioned in 8th century before Christ, or BC. आज से 3000 साल पहले के आसपास जो न्याय स्कूल हमारा डिस्कस करता है, उसे 2200 साल 600 साल के बाद, कम से कम 600 या 500 साल, जो भी whatever was the time frame of Aristotle, it was discussed by Aristotle. He went for comparative method, and then in between these traditions of thinking, zero was invented in India. So scientific temperament is fundamental to Indian tradition of thinking. So in the medieval time, then in the during the Renaissance time, we went for the freedom of fields, and the traditional the uniformity of the subjects was dismantled into different fields, and the positivism of Comte and the post-positivist temperament of the age, that gives a new dimension to social sciences, and the fields of political science, these are the products of modern times. And that's why when we go for the understanding of research methodology, we just stuck up to last 2-3 centuries. Now I would come to the primary processes of and the major issues engaged with research. As we know that research, the word itself speaks about searching again. So we go for, as human beings, there are 3 terms that are broadly used in ontology, OEM. These are used in research methodology, how research takes place. And because we are having these fundamental OEM questions, ontology refers to the human existence. And these are the philosophical questions. Man is basically an intellectual being, so we have philosophical questions, and what is beyond his sensory organs, or what is beyond the objects around him, he starts thinking inward and looking for the questions. So he gets segregated from this dimension of thinking of the external world, and goes into the internal world. So ontology is primarily the questions about the existence, and the Oriental thinking, I would say we have been more, that means at one stage of mental facade, एक स्तर पे जो हमारा जो सोच है वो काफी advanced रहा है, I would say. That's why we have turned inward more. The Indian philosophical thinking has been inward, it has been subjective, and it has devised several modes of advancement of ideas, several modes of development of ideas. And the spiritualism is the primary facade, or the primary property of Indian philosophical thinking. But in the West, it is external, or it is more objective, and they went for rationalism. Although I don't say that rationalism or the positivist kind of thinking is foreign to Indian tradition. We all know that the students of philosophy must be knowing about this, that Rishi Charvak was there. उन्होंने तो बात वो तो he approved with. He was, in fact, I would say that to some extent it has not been explored in philosophy, in the comparative philosophy. It has not been explored that the
Buddhist philosophy primarily derives from Charvak school of thought. So if there are students of philosophy, they have one area of exploration, and this exploration term means we want to get something out new which has not yet been discussed by anyone. This is related with the idea of review of literature also. I'm not going into those primary steps of the conduct of research, from the formulation of research problem, and then understanding the problem through the available literature and the available review of literature and the professional writings over the subject, and then the formulation of hypothesis, and then all the methodology, research design and analysis, and the concluding parts that we that are followed in research process. So I would now I have diverted towards this, so I'm forgetting what I was actually talking about. I was talking about how Buddhism derives from the Charvak philosophy. Very few people may be knowing, and I won't say it with 100% certainty, but so far as I remember my second year notes that I had gone through, Charvak used to experiment with the existence of the supernatural, with the existence of the idea of God, with the existence of the notion of soul. And it was referred to in those books. And it is a matter of exploration that Charvak was able to establish that there is no soul. He went for experimentations, and when a soul departs after the death of a person, how can it be tapped and how can it be established? So his experimentation, his analysis, and his establishment of the non-existence of soul and the non-existence of God. He was a materialist, and in Greek thought we have seen an Epicurean school of thought. Epicureans are there who speak about eat, drink, and be merry, and they speak about the what is real, what is the primary ontological question of human existence is what is real. Is there God? If God, is it real? How to prove that? These are the primary ontological questions. So Epicureans also derive from Charvakian kind of thinking that there is no soul, there is no God, and these ideas went on to influence the ideas of Buddhism and the Buddhist philosophy. And we all know that when Lord Buddha was asked, he kept silent about the existence of God. So this is how Indian tradition, on both spiritual as well as on scientific planes, it has carried forward the idea of human existence, the idea of the real, the idea of the metaphysics, the physical and the metaphysics, which is beyond the human perception. So the ontological questions are followed by the epistemological questions. I said that I would speak about these three terms, then I will move to, after leaving the primary oft repeated things of research design and data collection and methods of data collection and different techniques of analysis of data and its presentation. So the epistemological issues. The second thing primary to human thinking is that the ontology, the existential issues, if we keep them apart, as Heidegger at one stage says that about the human condition, he says that man feels that he has been thrown into a particular situation. He has been thrown into, that means man is not having control over his existence. This is the concern of Nietzsche also. The existentialist, the primary, the Sartre also, they speak about the human existence, and
the questions of existence and the challenges of existence. So as Kierkegaard says, Heidegger says that man has been thrown into a particular position, उसको फेंक दिया गया लेकिन उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है. ये ontological question है, ये existential question है. But then there are things, there are alternatives, there are the bodies of knowledge which are available. That is epistemology, with the help of which we accumulate the ideas of the past, we accumulate the wisdom of the past, and we go on to add to the accumulated body of knowledge, and that accumulation and takes place through methodology. How that knowledge is added to, we are having knowledge about, for example, if I'm a student of political science, I would say that if I am taught about socialism, or if I am taught about democracy and how a good democracy functions, then I have lots of literature, I have lots of experiences of the states around where what kind of system was introduced, the parliamentary form of government was introduced, or the presidential kind of government, or the mixture of the two was introduced, and what are the success stories, what are the stories of their performance. So that is the accumulation of knowledge of the past experiences, that is also called the accumulation of the wisdom that comes from past to the present. इस तरीके से ये पीछे से चीजें हमें एपिस्टेमोलॉजी में आपके आती हैं, जिससे कि एपिस्टेमोलॉजी को मुझे एग्जैक्टली हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं, या मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसको ट्रांसलेट करने में. तो ये जो एपिस्टेमोलॉजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर है, वो आपके रिसर्च से इसलिए प्राइमरी है कि आपका जो रिसर्च है, रिसर्च इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द बॉडी ऑफ नॉलेज. इफ यू आर हैविंग a consent with this body of knowledge, आप इसी को फॉलो करेंगे. If you have a disagreement with this body of knowledge, that will turn out to be a research question. How to formulate a research question is again a very important thing. अभी मैं इसके बाद एक रिपोर्ट राइटिंग पर थोड़ा सा बात करूंगा, एंड देन हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर, उस पर भी बात करूंगा. तो ये चीजें रिपीट होंगी क्योंकि सिलेक्शन आपने प्रॉब्लम का कैसे करना है. तो epistemology is the body of knowledge that is available with you, and how you want to add to it. You may be in agreement with certain things, but you may be in disagreement with certain things, and the things with which you are in agreement, you may be adding to that something more. So those things which are incomplete, which are unavailable, which have not been attempted to in the past, becomes the issues of creation of research problem. They become the issues of research. And a particular theory, if it has been defined in a particular way by certain people, you may have disagreement, or you may have something more to add with that. So when you want to add to the body of episteme, जब आप इस ज्ञान भंडार में कोई चीज नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो ये समझ लें कि आप एक शोध विद्यार्थी बन गए हैं, और उसमें जो जोड़ने की बात है वो कई तरह की होती है, सब्जेक्टिव भी होती हैं, ऑब्जेक्टिव भी होती हैं. सब्जेक्टिव बातें जिनको कि हम इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, विच इज वेरी प्राइमरी टू क्वालिटेटिव रिसर्च, वो इसलिए थोड़ी सी कम तवज्जो रखती हैं रिसर्च में, क्योंकि उसमें देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ योर इमोशंस एंड योर प्रेजुडिसेस एंड योर सेंटिमेंट्स. सो जहां पे सेंटिमेंट ऐड होगा, वहां पे आपका थोड़ा सा ओपिनियन जो है या आउटकम जो है वो बायस्ड होगा, और वो जो आप बॉडी ऑफ नॉलेज में जुड़ेगा तो दैट विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव. और वो most of the people of the universe that you are addressing, they may be in disagreement with that. तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी और जो क्वांटिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा साइंटिफिक नजर आती है. इन पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो वी गो फॉर दिस, पॉलिटिक्स आर देयर, इलेक्शन सर्वेज आर देयर, तो काफी कुछ 80% तो सही निकलते हैं, लेकिन जो 20-30% एरर्स आते हैं वो वही है जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था. Excuse me.
जो मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि क्रिटिकल थ्योरी साइंटिफिक मेथड्स को भी चैलेंज करते हैं कि साइंस इज कांट बी अप्लाइड टू ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि आपका जो इशू ऑफ डीलिंग है, that is an emotional being, that is a subjective being, so that can't be tested accurately with the methods of science. So the epistemology is the body of knowledge that you want to add, that you want to probe, and out of which you want to create new things. And the way how you want to add, the way how you want to create something new is the arena of methodology. आपको तरीका चाहिए भी, आप कैसे जोड़ेंगे, तो उसमें लॉजिक भी है, इन्फ्रेंस भी है, रीजन भी है, आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं। तो इसको हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इसको हम लॉजिक और इन्फ्रेंस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इनको प्रेजेंट करते हैं चीजों को। और जो आपका लॉजिक और इन्फ्रेंस बेस्ड अप्रोचेस हैं, वो दो तरह की अप्रोचेस हैं जो ब्रॉडली हमें अंडरस्टैंड करनी है। एक डिडक्टिव अप्रोच होती है, एक इंडक्टिव अप्रोच होती है। इंडक्टिव मींस समथिंग कम्स फ्रॉम सैंपल टुवर्ड्स द पेरिफेरी, आपके टेरिटरी, जिसको यूनिवर्स को एड्रेस आप कर रहे हैं। और जो डिडक्टिव है, आप यूनिवर्स से ले रहे हैं, and with the help of certain hypotheses and research questions and collection of data and application of mathematical tools, when you present something, then what appears out to be there is the outcome of quantitative research. So deductive, or iske I am having, I think few more deductive, और इस पे मैं hypothesis पे बाद में hypothesis ले लें पहले, या कहीं I have prepared this one, मैं इस discussion को लूंगा, then I will come to you may remind me about the exercise and utility of hypothesis and concepts and variables, how they are important in research, although I will do just a brushwork over that, because I think the other part, the preparation of a research paper and report writing, is equally significant, that I have been asked to talk about. See, broadly, we have deductive and inductive approach. These are the approaches that refer to qualitative and quantitative. Deductive are mostly quantitative approaches, and inductive are mostly qualitative approaches. Broadly, there are four approaches. In an approach, I would, if you have approach को हिंदी में मेरे ख्याल से दृष्टिकोण कहेंगे। तो जो दृष्टिकोण है और जो रिसर्च मेथड है, विधि है, इसमें अंतर है। विधि लिमिटेड है। विधि इज द एप्लीकेशन ऑफ द टूल्स, द एप्लीकेशन ऑफ the ways to collect the data and analyze the data and present the report. ये लिमिटेड है, लेकिन दृष्टिकोण वाइडर है। दृष्टिकोण आपका क्वांटिटेटिव है कि आपका एक डेटा इकट्ठा आपने क्वेश्चनर बेस्ड करना है और उनको यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू डिजिट्स। और क्वालिटेटिव है जिसमें कि केस स्टडीज आ जाती हैं और आप एक पर्टिकुलर लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, यू बिकम पार्टिसिपेटिव आल्सो विद देम, और आप उनकी हैबिट सीखते हैं, उनकी कल्चर सीखते हैं। इस तरीके से आप कैसे चीजें प्रेजेंट करते हैं। तो अप्रोचेस जो हैं ब्रॉडली चार तरह की हैं: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, प्रैग्मेटिक, पार्टिसिपेटिव एक्शन रिसर्च। तो ये मैंने यहाँ पे भी डाला है, आपको स्क्रीन पे यू कैन सी। सो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, दीज आर बेसिकली केस स्टडीज। For example, the tribal studies, the studies of a particular community, the sociological studies, the anthropological studies, where we go for the study of man and nature relationship, and the human races and their cultural habits, and the ecological order, and the interrelationship of man and nature. So anthropology and the sociological and historical studies are mostly qualitative, and the quantitative studies are mostly in political science. For example, election studies, you are getting data from people and converting that into digits, and with an
application of certain statistical tools, you come out with the predictions that this can happen. So these are the quantitative studies in management and commerce. These are this is the primary approach that is followed. The consumer and producer relationship, the companies, how they operate, how they try to attract the consumers. These kind of studies, when you get the data and quantify them into tables and present them into tables, and after the application of statistical tools, you come out with the findings. These are the quantitative. Another one very important is pragmatic. Pragmatic is by we are having some particular issue with us. कोई समस्या है इमीडिएटली, तो अब आप उसमें थ्योरेटिकल डायमेंशन लगाने लग जाएंगे क्वालिटेटिव की तरह, या आप फील्ड सर्वे करने लग जाएंगे क्वांटिटेटिव की तरह, तो इसमें लगता है कि भी इट में भी ए लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम से वो कहीं मैच नहीं कर रही है, तो आपको लगता है कि भी both approaches can be, the quantitative and qualitative can be mixed up. For example, I would say we go for the use of certain terms in research. These are the methodological triangulations. Methodological triangulations and researchers triangulations, ये terms use होती हैं. तो methodological triangulation को हम ऐसे समझेंगे कि सपोज एक उत्तर प्रदेश का आदमी नॉर्थ ईस्ट में जाता है और वो किसी ट्राइब को स्टडी करना चाह रहा है, या किसी पर्टिकुलर नागा कम्युनिटी को ही वांट्स टू स्टडी, कि उनके जो सोशल बिहेवियर क्या है, कोई कल्चरल वैल्यूज क्या हैं, और उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या हैं. तो वो चले तो जाएंगे, लेकिन वो कैसे बात बनेगी जब आप उस कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं. तो आपकी जो पहली जरूरत होगी, यू वांट a translator who can communicate your language to those people. And if you are having the research problem of understanding the genetic or certain medical issues with the community, तो आपको पता है कि आप तो अगर सोशल साइंस के हैं तो आप मेडिकल एक्टिविटी या रिसर्च तो यू कांट कंडक्ट. Then you have to take the help of medical scientists who can take the blood samples and come out with the things that you are looking for. तो इस तरीके से आपने दो तीन चीजें कर ली कि आपने you have taken with yourself, एक डॉक्टर भी ले लिया, मेडिसिस्ट ले लिया, एक ऐसा भी आदमी आपने साथ ले लिया, who can communicate, who can translate your language into that community. और इस तरीके से जब आप सेवाएं लेते हैं डिफरेंट फील्ड एक्सपर्ट्स की, तो when you are doing this at researcher level के दो चार लोगों की टीम रिसर्चर्स की बना ली, तो that is researcher triangulation, means mixing up of the methodologies as well as researchers according to the requirement of the situation, according to the requirement of the phenomena under study. So pragmatic approach is the approach that is mostly followed. हमें लगता है कि अभी हम qualitative में ही हैं, लेकिन for example very recently what is associated with it, that one paper of mine was accepted by Social Change. So this study was on some tribe of Kinnaur in Himachal Pradesh. So I'm not conversant with the language of Kannada. So I had one student of mine who jointly worked with me, and the question that appears from the side of we use this pragmatic approach, qualitative, as well as we collected the data on, for example, the literacy status or the income level, and the data that can be quantified, the data that can be numerologized, the data that can be turned into numbers is quantification. So it is not completely qualitative, but quantitative also. And one important thing, that when we talk about research ethics, I thought that I will take this thing later on, but it is occurring right here because with certain reference here.
तो रिसर्च एथिक्स के हिसाब से वन क्वेरी वाज फॉरवर्डेड टुवर्ड्स मी बाय द जर्नल कि भाई आप अपनी गिव योर positionality term they use. So the positionality, if you find that if you are from UP and you are studying a particular community around you, then you will definitely be asked about your positionality. That if you are member of that particular community that you are trying to explain or you are trying to research over, then you may have soft corner or bias towards that community. So if you have that shortcoming, then this is the ethic of the research, that we have to, in the beginning, we have to commit that these are the shortcomings, this is the positionality, the researcher is part of this particular community. And with that commitment, the reader will find the work will go well, that at least researcher has completed. And when we go for the community issues especially, or the gender issues especially, the ethics and the dictates of ethics become very important. We have to ask questions according to the situation, and according to the situation, that your queries and your questions don't hurt your questions or your questionnaire or your dialogue or your interview or your observation doesn't offend the feelings of the observed, of the participant that you are dealing with. So this is the primary ethic, and especially in community studies, questions should be indirectly framed instead of directly framing that from a particular community, are you against Parda Pratha? Are you against this? Are you against this? Indirectly, it can be asked that with the increase in education, people have stopped using Parda, then what kind of response you will get? So indirectly, you will touch the subject instead of directly hitting the subject or hitting the feelings of the subject. So the pragmatic approach is very significant. We go for qualitative as well as quantitative, and then move to pragmatic. Normally, we go for the mixing of these approaches. And then third one is PAR, participative action research. Participative action research refers to broadly the qualitative research. When we become part of a community, when we the most of the students who are dealing with tribes, they go to stay with tribes. I have worked on tribes of Ladakh also. So we went and we stayed there in their ribos. Ribos are their tents made up of the wool that is taken from yaks. So that is a wonderful experience. You see their kitchens, but their kitchens where they used to burn wood and cow dung or the dung of the sheep and goats. Now they have been using cylinders and gas stoves, these things. So this is the transformation of the fuel system. These are some interesting areas of study while doing the tribal studies. So when you do community studies, we become part, we start participating, and without affecting and without letting the community member know about what your actual intentions are. So this is how these approaches are very fundamental. And in qualitative approach, there are three methods that I have been discussing here: the narrative method, the historical method, the case study. Case study, we all know that community studies, we go for a particular community, we determine the area, the universe of the study, and then we go for interviewing or observation or participation. These are the methodologies that are followed in the survey. And the historical studies, which are mostly followed in history, and these studies are narrative in nature, and these studies are descriptive in nature, and the presentation of things as they were. So in history, there has been lots of debate that people have been talking about the Darbari writers. Darbari writers, they were influenced, they were influenced by the
the kings or the clans they were working for, and for certain small favors they used to represent the things. So the historical research has to rely on several sources, on murals, on archaeological relics and evidences. It will be a different. It will be a different and area. I won't go much into that. And then narrative. Qualitative research, narrative that I discussed. This is followed in literature primarily. For example, I didn't discuss that researches of बहुत सी चीजें छूट जाती हैं. मुझे कुछ अगर आप लोग कहीं थोड़ा सा भी बोर हो रहे हो तो काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं वहां से शफल करके बस इसके बाद में हाउ टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट एंड हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर उस पर ब्रीफ डिस्कशन करूंगा. And then we will be discussing the things. Narrative approach history में भी follow की जाती है, literature में भी. अंग्रेजी वाले जानते हैं. There is in English fiction there is narration of things, and then dialogues are there, and biographies are there. So वो narrations हैं. तो वो social sciences के लिए कई जगह काम करते हैं. When you are into community studies, then you try to narrate the oral traditions of a particular community. उनके narration के बाद you try to correlate that narration with the current society and the relevance and the significance in the current society. तो ये बड़ा interesting research कभी सीधे नहीं चलेगी कि अभी qualitative है तो qualitative ही चलेगी, quantitative है तो वो वैसे ही चलेगी. कॉमर्स मैनेजमेंट में क्वांटिटेटिव चल सकती है, लेकिन वहां पे भी बहुत से सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं कि एक पर्टिकुलर सोप इज पॉपुलर विद ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंज्यूमर्स, लेकिन एक दूसरे क्लास ऑफ कंज्यूमर के साथ नहीं है. तो वहां सब्जेक्टिव या क्वालिटेटिव फैक्टर्स अगर कम्युनिटी फैक्टर्स एंटर होंगे तो दे बिकम एन एरिया ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. तो रिसर्च एक मोस्टली एक application of research tools and methods according to the requirement of research problem. इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है कि भाई आपको वास्तविकता सामने आए, और ये एक अलग तरीके से सारे जो तीनों स्कूल्स हैं, चारों स्कूल्स जो रिसर्च के अप्रोचेस हैं जो मैंने आपसे बात की, उस तरीके से फॉलो नहीं की जाती हैं. तो अच्छा, इसके अलावा एक सोशल साइंसेज में वी हैव before coming to the how to prepare a research report and a good research paper, or I will speak about plagiarism also. तो मुझे brief में थोड़ा सा एक discussion यहाँ पे I'm getting the relevance of this here, that there are several paradigms in social sciences. पैराडाइम्स हैं या इनको मेटा नैरेटिव्स हैं, मेटा नैरेटिव्स भी बोलते हैं कि भी एक बड़े एक स्थापित सी बातें हैं. जैसे साइंस में न्यूटोनियन साइंस हो गई कि भाई न्यूटन के जो प्रिंसिपल्स थे वो दे बिकेम ए कॉमनली एक्सेप्टेड ट्रूथ ऑफ द साइंस वर्ल्ड, बट देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय द आइंस्टाइनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल. तो जैसे विज्ञान में ये नैरेटिव्स एक के बाद दूसरा आता जाता है, वैसे ही सोशल साइंसेज में भी आता है. एडम स्मिथ का आपका जो द थ्योरी ऑफ लेसेज फेयर है, इट रूल्ड यूरोप फॉर क्वाइट लॉन्ग. आपका इनविजिबल हैंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट. ही स्पीक्स अबाउट द लॉ ऑफ नेचर, दैट the trade and the economic principles, they shouldn't be intervened by individual, or they shouldn't be intervened by the laws of the state, and this is how economies grow. And लेकिन ये जो principle है, we find that this principle is to some extent is based on the principle of survival of the fittest, या जो fit है ये Kantian या Spencerian principle of survival of the fittest. तो Adam Smith on economic ground is supporting the Spencerian idea that one who is fit, only that person will survive. तो ये पैराडाइम्स हैं, लेकिन ये जो लिबरल क्लासिकल लिबरल पैराडाइम है, इट वाज रिप्लेस्ड बाय द कंटेम्पररी लिबरलिस्ट.
who spoke about the intervention of state, who spoke about the welfare functions of state. And then we come to socialism and the Marxist thought. They spoke about the class reality. So these are, and then later on the Gramscian idea of the dominance of the specific dominance of the social elites, or the Fulton idea in political science or in social sciences, or the eco-criticism, these, or these gender studies. These are the different perspectives and meta narratives on the basis of which social sciences have moved forward, and they influence your research approach also. A person who is influenced by the socialist or the Marxist approach will go for the class analysis, will go for the analysis on the basis of poverty and richness. So these paradigms are very important in social sciences. And then there is another school, that is critical theory. Critical theory that I talked about initially. The critical theorists like the Gramsci, the Habermas, and several other theorists, they speak about the established understandings, established knowledge systems. The concept of knowledge for them is the idea of a particular class or of a particular people. It is not true of whole of the society. It is not true of whole of the world. So this idea of knowledge, they keep on criticizing, be it scientific knowledge, be it theoretical knowledge of the world of social sciences. So critical theorists, they keep on insisting that any kind of understanding in social sciences is subject to challenge. It may be true to the people who have floated that idea. For example, Foucault speaks about the idea of knowledge. Knowledge is power, but the knowledge is power is one dimension. Sometimes it is capital that is power. It can be challenged on certain grounds. Sometimes it is class that is power. So the dimensions of power could be challenged with the methodology of critical thinkers. And they also, these critical thinkers, they also speak about against the application of scientific methods. As we know that the behavioralists in social sciences went for application of scientific method. Then the post-behavioralism appears that speaks about the existence of values and the other cultural properties, the social properties which influence the individual behavior and which negate the significance of scientific methods. तो मैं यहाँ पे, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो उदय जी ने मुझे कहा था कि वे कुछ चीजें हैं important वो डिस्कस करनी है, तो I will move on to writing a research report. Since we all know that research is a process, it is a process. It begins with the raising of a question, the development of research problem, and review of literature, and after reviewing the relevant literature, coming out with the thesis statement or the primary questions of the research, the development of hypothesis. Hypothesis मैं भूल गया discuss करने, 2 तरह के hypothesis होते हैं, null and वो, लेकिन अब मैं I will be losing here time की किल्लत की वजह से, so I will drop the discussion over hypotheses and variables and concepts and theories. You must have discussed or you must have come across these ideas from other lectures also. So the data collection, whether you are going for qualitative approach or quantitative approach, you collect the data, you go for analysis of the data and presentation. The last part of the research process is writing of the report. And writing of the report is the most important element. Research may be good, research may be bad, but if it is not research report, then whole exercise
is flawed, then whole exercise fails. So a research report is, there are certain important things that we must include in writing a research report. For example, it should be written lucidly and precisely, and the language should be simple. What we have problem हमें बहुत से दिखते हैं, ये हमारे हिमाचल यूनिवर्सिटी में भी we have this problem, and I know that we keep on getting dissertations and theses from several other universities, for example, from Delhi and JNU and your Kurukshetra and MDU, Jammu, all this from the northern center, we keep on getting the dissertations. Then the level of language and the presentation of report, we see the difference. I won't name that. We find that most of the works, they lack in, I tell our students, we tell them that if you are not comfortable with the English language, let us go in Hindi. But then the problem with students is that in Hindi, most of the literature available is in English. Then how they will carry out that language in Hindi medium? So इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, और वो reports जो आपकी जो final report छपती है, जिसके की 3 पार्ट हैं, वही प्रिलिमिनरी और मेन बॉडी और कंक्लूडिंग पार्ट, जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो उसमें अगर लैंग्वेज की दिक्कत रहे तो कितना भी अच्छा काम हो, थोड़ा सा उसमें वो मजा नहीं आता, या वो रीडर अगर आपका या इवेल्युएटर आपका इज नॉट कंफर्टेबल विद द लेवल ऑफ लैंग्वेज, तो आपका सारा रिसर्च एक्सरसाइज को थोड़ी सी दिक्कत आती है. तो लैंग्वेज शुड बी क्वाइट गुड, and the language style should be academic, और उसमें हमें I और V यूज नहीं करना है. बहुत जगह ये रिसर्च पेपर्स में भी है, और बहुत से लोग I have done this, I have done this. तो नॉर्मली जो हमें 90s में सिखाया गया है, मैं तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ. हालांकि मैंने बहुत से देखा वेस्टर्न राइटर्स और वेस्टर्न स्कॉलर्स आज की डेट में व्हेन दे प्रेजेंट सम पेपर्स, सो वो लिखते हैं कि आई हैव डन दिस, आई हैव फॉलोड दिस, तो उसकी जगह बेटर के भाई द रिसर्चर हैज फॉलोड दिस पर्टिकुलर टेक्निक, इस तरीके से यूज किया जाए. तो आई, मी, माई, ये चीजें जो हैं थोड़ी सी अवॉइड की जाए रिसर्च में. और आई विल कम टू द बॉडीज ऑफ the research development of एक सेकेंड, इसमें मुझे एक चार्ट इज मिसिंग. मुझे लग रहा है कि वो चार्ट में वो चार्ट I have failed to paste here in this slide. Now, I will discuss with you that research report is primarily fragmented into 3 parts: the preliminary, the main body, and the concluding part. The preliminary part of research report refers to the title of the research problem, the certificate by the supervisor, the contents, the acknowledgements, and the initial, if you have acronyms, the list of tables that is placed in the first part of research report. For example, you are writing MPhil dissertation or PhD thesis. So this is how the preliminary, the first part of research report goes. One thing is that in India, for PhD or senior degrees, we go for the term PhD thesis. We use the term thesis, and the United States mostly they use dissertation for higher degrees and thesis for smaller degrees, although thesis has a wider connotation. It is inclusive of review of literature and broader things it brings into its fold. And the main body, it includes your introduction, the discussion over the primary topic, how you collected the data, interpretation of the data, and the presentation of the data. And the last part, that is concluding part, that refers to the presentation of your findings, the conclusions, and the formal part, just like the preliminary part. We go for references and notes and bibliography and appendices and indexing, etc. So the reports are should be written, as I told you,
in a certain specific way, and they shouldn't disturb the reader language wise and the portion wise and the section wise. So as this slide is speaking about the qualitative research report and quantitative research report, qualitative research reports, as we discussed, they are about the community studies, they are about the qualitative data, they are about the observation and participation studies. Against this, the quantitative studies are represented through tables and data and explanations and application of mathematical tools. Now I will go for the presentation of how to prepare a good research paper. This I'm not having here on this slide, but might be somewhere I have discussed this. That see, for writing a research paper, one must be clear about how to develop a central thesis of the paper, how to develop a central thesis. And this central thesis is just like the development of research problem for a dissertation or for a PhD work. But the scope of the thesis, the scope of research problem that you are trying to discuss in a research paper should be limited, because you have word limitations, and most of the good journals, Western journals or the journals in India journals, they don't have that word limit, but most of the journals, the quality journals in social sciences, they speak about the word limit between 8,000 to 12,000 words. Some have even limit of up to 15,000 words. I remember one of the articles by in Cambridge University Journal, something I'm forgetting. It is about the studies in history, or it is about the studies about communities. One professor of Punjab University, Professor Ronki Ram, his paper was published in that particular journal, and it had, I think, about 30,000 words. This paper ran into about 50 to 60 pages, 58 pages around about. So that was an exceptional case. If the editorial board thinks that some paper deserves a complete space, so otherwise normally from 6,000 to 8,000 to 12,000, these are the limits of writing a research paper. And when we develop the central thesis, it should be developed by brainstorming the topic. You can discuss, the students can discuss with their supervisors, the teachers can discuss with their colleagues, they can discuss with the people who are from the same stream they are in touch with. And after discussing the topic, you can come out with some fundamental pinning questions, and that can be presented as the research problem in the introduction, where we normally discuss the background of the central thesis, the research problem in a research paper, and then we present the central thesis. What is primary to writing a good research paper is that while writing a research paper in business sciences or in commerce or in management, these people normally go for writing a brief review of the prominent works of the related with the research problem or the topic that you have picked up. In social sciences, we don't go for that. In certain fields, I have seen that the people of public administration go for it. So it may be a methodology, but most of the, since you have word limit, since you have space limit, then the review is normally in research papers avoided. And with passing glimpses, we can refer to some prominent voices and their concerns about the topic, and you have to wade through safely through the existent literature जो आपका available है. आपका जो research topic है उससे अलग तो नजर आना चाहिए. आप उसको follow तो नहीं कर सकते. This is the primary principle of following a research.
If it is already, it has been done by someone else, then your effort will turn futile. तो आपको अपना रिसर्च का थीसिस जो है, सेंट्रल थीसिस जो है, बाकी जो अवेलेबल चीजें हैं उनसे अलग दिखाना है। और जो सबसे बड़ी गलती एक हम लोग करते हैं, मैं कोई बहुत बड़ा रिसर्चर नहीं हूँ, आई डोंट क्लेम, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है अपनी राइटिंग्स में भी, जब मैं 20 साल पहले के पेपर अभी देखता हूँ अपने, और आज के पेपर जब मैं अपने देखता हूँ, तो मुझे बहुत कमियां नजर आती हैं। तो उसमें दिक्कत ये है कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस द सेंट्रल थीसिस का मतलब है कि भाई चलो एक मैं एग्जांपल दे दूं कि ये जो आपके जौनसार बावर है, एक ट्राइबल एरिया उत्तराखंड का, या किन्नौर के लोग जो हिमाचल में ट्राइब्स के हैं, ये मोस्टली चंडीगढ़ में क्यों सेटल हो रहे हैं? व्हाई दे डोंट वांट टू स्टडी इन किन्नौर? अगर ये मेरा एक टॉपिक होगा तो उसमें हम ये करेंगे कि दैट द मूवमेंट ऑफ यूथ फ्रॉम किन्नौर टू चंडीगढ़, द रीजंस बिहाइंड दिस, इस तरीके से हम टॉपिक अगर फ्रेम करेंगे, तो जब हम शुरू करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और डेटा कलेक्ट करें, मेन बॉडी में एंटर होते हैं जहां पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो हम कई बार इतने फ्लोड आउट, वी गेट flowed away with the data that we have collected, that we forget to link up time and again the central thesis with the data. और उसमें क्या होता है कि शुरू हम कहीं से करते हैं, और आपका जो रिसर्च पेपर है जब एंड होता है तो वो कहीं और पहुंच जाता है, और वो फिर कंक्लूजन में आप लिख देते हैं कि जी ये हमने यहाँ से शुरू किया था और ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन वो एक बहुत बड़ा पेपर राइटिंग में कमी नजर आती है। आपका जो सेंट्रल थीसिस है जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट शुड कीप ऑन टचिंग द पेपर in almost every second page of the, after every 500 to 1000 words of the paper, ताकि रीडर को यूं लगे कि he is connected with what he was told in the beginning, he is connecting with the same stuff in between. तो ये एक पेपर राइटिंग में बहुत जरूरी चीज है। दूसरे पेपर राइटिंग में we have to again avoid those IV and वो, and we have to we should avoid highly alliterative or complex use of complex terminologies. And if we go for use of complex theories or terminologies with the help of notes or with the help of parentheses, we should try to make briefly the meaning of those terms clear. Otherwise, to reader, if you are introducing some new term and without explaining that, you move ahead, that is clear to you, but that is not clear to normal reader. That is not clear to students of other subjects, because we are into interdisciplinary engagements these days. तो वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। और दूसरे आपका रिसर्च पेपर, we should try to theoretically enrich it. Theoretical enrichment of research paper gives strength to your research paper. अब ये theoretical enrichment कैसे होता है? अगर मैं suppose एक आपको टॉपिक देता हूं कि चलो एक टॉपिक पे काम करते हैं कि the existence of divine institutions among the tribes of Nagas. तो नागा जो लोग हैं उनके वहां डिवाइन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमें यहाँ पे जब हम शुरू करेंगे तो जो आपका टॉपिक है, इट इज सिग्निफाइंग ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल फ्रेम, डिवाइन इंस्टीट्यूशंस अमंग नागा ट्राइब्स। तो इसमें डिवाइन इंस्टीट्यूशंस आपको थ्योरेटिकली डिस्कस करना है ब्रीफ में, और आप अपने पेपर के लिए किस डेफिनेशन को मान के चल रहे हैं जिसको कि आप फॉलो करेंगे कि भी डिवाइन इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। उसके साथ ही ट्राइब शब्द आ रहा है, तो ये आपके कॉन्सेप्चुअल जो एक फ्रेमवर्क बनेगा उसमें ट्राइब्स, डिवाइन इंस्टीट्यूशंस एंड द मिथ्स and things which are related, concepts which are closely knitted with these institutions, they should be discussed briefly in the introductory part. So बीच में जब भी आप divine discuss करेंगे तो how divine institutions are working in Himachal, how they work in Andaman, or how they work in the tribes of Odisha, briefly you can use the
past observations of scholars and relate them with your problem to get your thesis more strengthened. ऐसे haphazardly we can't use, लेकिन जहां पे relevance नजर आए तो वहां पे आप अपने different जो available literature है, you can link up that literature with the your central thesis and your discussions. This is how we say that a paper is theoretically elevated. क्योंकि हमारे बहुत से पेपर्स इसलिए भी रिजेक्ट होते हैं अच्छे जर्नल्स में कि हम सीधा फटाफट जाकर के डिस्कशन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन के बाद डिस्कशन में आ जाते हैं, लेकिन उसमें वी डोंट गो फॉर थ्योरेटिकल डिस्कशंस, वी डोंट गो फॉर conceptual and theoretical frames in which that central thesis has to be placed. So this is one more prominent area of writing a research paper. Or when we come out with the findings overall, as I said, that we should not lose touch with central thesis of the paper that was introduced in the beginning. That central thesis or central question should pervade throughout your paper. And when you conclude the things, जब आप पेपर का conclusion लिखते हैं, तो conclusion normally आपका 200 to 500 वर्ड जाना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा पेपर लिखा होता है लेकिन कंक्लूजन 100-150 वर्ड्स में कंक्लूड वाइंड अप कर देते हैं, तो वो भी एक पेपर राइटिंग की वीकनेस रह जाती है. तो आप जो कंक्लूजन्स हैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें. कंक्लूजन में सेंट्रल थीसिस को आपने कैसे डील किया एंड व्हाट आर योर फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, वो मेंशन करनी है. वन थिंग हैज टू बी रिमेंबर्ड हियर that in concluding remarks or conclusions, never introduce some new term, never introduce some new idea, because you are concluding your paper, and if you introduce something new in conclusions, that means that you are dissociating from your previous discussion. So conclusions may never introduce a new term, never introduce a new idea, never introduce a new theory. It should be the abstract. It should be the abstract of the complete findings of your research exercise that you have carried out. So this is how a good research paper, और आज की डेट में if you want to get your paper published in a good journal, क्योंकि बहुत से लोग they go for publications in social sciences में we have economic and political weekly, seminar and sage journals, political science के, sociology के बहुत सारे हैं, rootflesh के journals हैं. All these journals have their own specific frames and their own specific directions. So if you want to submit your journal to a particular, if you want to submit your paper to a particular journal, you have to first understand the broad themes of those journal. If your paper is not meeting the broad themes of the journal, then that will be rejected outrightly. You will get the email back that this journal doesn't, this paper doesn't suit the broad objectives of the journal. इस तरीके से टर्न डाउन हो जाएगा. तो अगर ट्राइब का पेपर है, ट्राइब पे किसी ने काम किया है, तो आप स्टडी ऑफ कम्युनिटीज और ट्राइबल स्टडीज और स्टडीज ऑन सोसाइटी इन्हीं में भेजें. अब वो पॉलिटिकल साइंस के किसी जर्नल में पॉलिटिक्स में भेज देंगे, दैट विल बी आउटराइटली रिजेक्टेड. सो the selection of journal should be according to the theme of the journal and according to the central thesis of the paper. And this is how, and then they give instruction about writing about a cover letter. कवर लेटर को हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि भाई कवर लेटर मींस कि हमने एक चिट्ठी लिखनी है कि भाई मैं फला फला हूं और आई हैव वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड आई वांट टू गेट इट पब्लिश्ड विद दैट. कवर लेटर का प्राइमरी फोकस शुड बी, कईयों का तो कवर लेटर की रेंज 1000-2000 वर्ड पूरा पेपर ही हो जाता है. कवर लेटर शुड इंक्लूड व्हाट इज न्यू यू हैव डन. देखें, रिसर्च में डेमोक्रेसी पे हम सोचते हैं कि क्या करना, लाखों पेपर छपे हैं,
लेकिन जब पंचायती राज में जाएंगे तो कोई नई चीज इमर्ज होगी, यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू। तो कवर लेटर शुड स्पेसिफिकली मेंशन दैट you have, if you have done on a particular area, which methodology you have followed and what is new, what specific thing you have come out in your research paper। और वो कवर लेटर पढ़ के ही आपके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यस दिस अपीयर्स टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग। और अगर आपने कवर लेटर से इन्फ्लुएंस कर दिया तो आपका पेपर जो है वो रेफरीज के लिए जरूर जाता है। रेफरीज की प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होती है, डबल रिव्यूज भी होते हैं, ब्लाइंड रिव्यूज भी होते हैं। और इसके लिए अगर आप अंग्रेजी के किसी जर्नल में अंग्रेजी भाषा में लिख रहे हैं तो कृपया अपनी भाषा जरूर चेक करवाएं, क्योंकि मैं जितनी बार अपने पेपर पढ़ता हूँ हर बार आई कम आउट विद सम मिस्टेक। तो आप क्रॉस चेक करें, क्योंकि ए पर्सन हु राइट्स इज नॉट ए गुड प्रूफ रीडर ऑफ हिज ओन वर्क। तो आप अपना रीडिंग किसी दूसरे आदमी से करवाएं, लैंग्वेज के अच्छे आदमी से करवाएं पेपर भेजने से पहले। अच्छा जी, इसके बाद उदय जी, आई थिंक मेरा एक छोटा सा डिस्कशन उस पे रह रहा है, प्लेजरिज्म पे। सर हमारा नेक्स्ट सेशन भी जो है 11 साढ़े 11 बजे से नेक्स्ट सेशन है, तो आप 5 मिनट में कंक्लूड कर लें सर। हाँ 5 मिनट में कर देता हूँ। प्लेजरिज्म मैंने एक किताब लिखी है और ये आप लोगों की नजर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है, बहुत सस्ती है। हार्ड कॉपी ना लें, अगर किसी का इंटरेस्ट होगा। 1150-1200 की है, लेकिन पेपर बाउंड का रेट हमने स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम रखवाया है, 350 रुपया इसका प्राइस है। तो फ्लिपकार्ट से आप मंगवा सकते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैंने अपने एमफिल के पीएचडी के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये लिखा है। इसमें मैंने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का स्टाइल शीट, शिकागो स्टाइल शीट, एमएलए स्टाइल शीट और एपीएस स्टाइल शीट जो हम लोग यूज करते हैं सारे डिस्कस किए हैं, और कैसे हमने स्टाइल शीट को इस्तेमाल करना है। और दूसरे प्लेजरिज्म पे मैंने एक इसमें स्पेशल अपेंडिक्स डाला है, तो उसी में से मैं आपको प्लेजरिज्म में ये पावर पॉइंट नहीं बना पाया था, तो उसी में से आपको मैं प्लेजरिज्म बता रहा हूँ। प्लेजरिज्म मीन्स व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स, या सीधी सी बात में बोले भाषा में कि जब हम किसी दूसरे के शब्द चोरी कर रहे हैं, दूसरे का काम चोरी कर रहे हैं और अपने नाम पे उसे छापते हैं, तो उसे हम प्लेजरिज्म कहते हैं। प्लेजरिज्म मीन्स दूसरों का काम कॉपी करना। और ये कई तरह का होता है। डायरेक्ट प्लेजरिज्म, जब हमने किसी भी आदमी दूसरे आदमी का वर्क जो है कॉपी किया है। सेल्फ प्लेजरिज्म, सेल्फ प्लेजरिज्म मीन्स मैंने 20 साल पहले कोई पेपर लिखा, आज की डेट में सेम टॉपिक पे मुझे किसी ने लिखने को कहा, मैंने वही कॉपी कर दिया, टाइटल बदल दिया और शुरू के 1-2 पेज बदल करके आई हैव अगेन, हालांकि कॉपीराइट इज माइन, but I have picked up the same old paper and presented under a new name, तो I have committed self plagiarism। अगर आप अपना ही कोई पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, नए सिरे से you are presenting it, then we have to go for at least 70-80% modification of that paper, and you have to make citations of your previous paper also. That's how you can avoid self plagiarism। And then there is mosaic or patchwork plagiarism। मोज़ैक और पैच, मोज़ैक होता है कई पीसेस के एक कलेक्शन, तो मीन्स के कुछ एक किताब से ले लिया, कुछ पैराग्राफ दूसरी से ले लिए, कुछ मैगजीन से, कुछ कहीं से, या गूगल में जगह जगह से कॉपी उठा करके पेस्ट कर लिए, जैसे कि नॉर्मली करते हैं। तो ये जो आपके एंटी प्लेज टेस्ट हैं उसमें ये सारा नजर जाता है कि ये आपने कहाँ से क्या क्या उठाया है। आपको अगर आप मोज़ैक भी कर रहे हैं, जैसा कि नॉर्मली इट हैपेंस, a researcher should stand between those descriptions and copy work। You have to analyze those representations and you have to give citations of those representations। जो आपकी जो आपने कॉपी पेस्ट किया है उनका आप साइटेशन दे दो, तो क्या आपका जाता है, क्यों इस तरीके से आप खतरा मोल ले रहे हैं। तो ये चीजें आज की डेट में कोई एक डेकेड में बहुत खतरनाक हो गई हैं। हमारे टाइम में इतनी नहीं थी, तो पता नहीं चलता था, हमारे से भी गलतियां हुई होंगी। लेकिन आज की डेट में तो आपका जो ऑनलाइन कोई भी पेपर सबमिट होता है, थीसिस सबमिट होता है, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द साइटेशन देन यू विल बी कॉट अप। और कौन कौन से वो हैं
प्लेज एंटी प्लेज आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, आई विल डिस्कस। एक्सीडेंटल होता है कि आपने यू वांटेड टू साइट लेकिन गलती से साइटेशन मिस हो गया है। आपने किसी का कोटेशन लिया, पैराग्राफ आपने किया या पैराफ्रेज किया, बट यू फेल्ड टू साइट द प्राइमरी सोर्स, तो दैट इज एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मीन्स डेलिबरेटली नहीं किया है, उसका पता लग जाता है। उसका पता लग जाता है कि अभी आपसे मिस हुआ है या आपने फ्रिक्वेंटली अपने रिसर्च में उसको फॉलो किया पैटर्न को। तो आउटसोर्सिंग एक ट्रेंड था काफी पहले, आज की डेट में भी हो सकता है, आई एम अनअवेयर ऑफ दैट पीपल यूज्ड टू कीप घोस्ट राइटर्स। भी पैसे दे दो, काम करवा लो, टॉपिक दे दो, वो करके दे देंगे, और इस तरीके से आपने आउटसोर्स करके आगे काम करवा लिया, जैसे कि आउटसोर्सिंग आपका जॉब्स में भी चला है। तो इस तरीके से जो आपके कॉपिंग है दैट शुड बी अवॉइडेड। वेरी सिंपल, जब आप कोई काम करते हैं, रिसर्च पेपर हो या डिसर्टेशन थीसिस राइटिंग वी आर डूइंग, let us mention all the sources that we from where we have picked up the things. Let us not clandestine the things, that will be dangerous. And there are softwares like bibme, plagiarism check, paper rater, grammarly, plague aware, plagiarism detection, pledge scan, Turnitin is very important, iAuthentic, Unicheck and Urkund. तो ये जो हमारे एचपी यूनिवर्सिटी में युरकुंड हमें फ्री में दिया है, तो युरकुंड आप मेरे ख्याल से फ्री में मिल जाता है इंस्टीट्यूशंस में सभी को, तो हम मोस्टली ये यूज करते हैं, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है। युरकुंड में आप अपना पेपर डालेंगे तो यू विल गेट द रिपोर्ट के 70% सिमिलैरिटी, 20% सिमिलैरिटी, 30% सिमिलैरिटी, एंड नॉर्मली ए गुड पेपर शुडंट हैव more than 10% similarity. But when you get the report, you find that your code will show in similarity test all the quotations that you have even placed there. Even if you have given sources and citations of a particular text, even then your code picks up. Then you have to deselect those selections and then reduce the level to 10. Turnitin is a costly software. I haven't used it, but my papers have been used in it. They use different colors, red, orange, and green, and different colors. With the help of those colors, they highlight the mistakes. And in the end, with the help of index, they will make that this color refers to this, this, this. If you have even paraphrased, आपने किसी का पैरा कॉपी की है, सारी भाषा भी अपनी भाषा कर दिया, even then it will trace that this idea appears to have been picked up from a particular text. तो Turnitin का जो database is very wide, तो उनका जो selection है, उनका जो report है, वो बहुत ही अच्छी है। और अगर आप कहीं Turnitin यूज करते हैं और आपका सिमिलरिटी टेस्ट 10 से कम आता है, तो मान ले कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरे ख्याल से उदय जी, आई थिंक 1 घंटा 25 मिनट हो गए, इतना लंबा लेक्चर मैंने भी कभी नहीं दिया लाइफ में, और 40-50 मिनट से ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, बट समहाउ आई हैव ड्रैग्ड इट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, एंड आई होप दैट द पार्टिसिपेंट्स, द वर्दी कलीग्स, द कॉलेज, मैं भी कॉलेज में सर्विस किया है 21 साल, एचपी यूनिवर्सिटी में मैं जस्ट 2016 में आया हूँ, अदरवाइज इन डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ हिमाचल आई हैव worked. I am an induct of 1996. तो 1996 से मैंने कॉलेज सर्विस ज्वाइन की है। यूनिवर्सिटी में मेरी एंट्री 2016 में हुई है। तो इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू have a word with the worthy colleagues of my college fraternity. मेरे तो यूपी में बहुत मित्र लोग हैं, बुलाते रहते हैं, कभी बनेगा तो जरूर आप लोगों से फिर राब्ता होगा। और थैंक यू वेरी मच। कोई कमी पेशी होगी तो मुझे जरूर बताएं कि मुझे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। नमस्कार सर। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच उदय जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार जी। जी शायद आवाज नहीं आ रही है सर के पास तक। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आपने इतने कम समय में 1 घंटे 20-25 मिनट में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिपोर्ट राइटिंग, एंटी प्लेगरिज्म टूल्स
तमाम सारे इश्यूज को आपने कवर किया, बहुत अच्छे से बताया समझाया हमारे पार्टिसिपेंट को। हम लोग जरूर इससे लाभान्वित हुए हैं। आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं अपने पार्टिसिपेंट्स अशोक कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर करें। अशोक जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। I, Ashok Kumar Sharma, Assistant Professor, Chanakya National Law University, Patna. I very heartwarming gratitude to Professor Harish Kumar Thakur, Department of Political Science, Himachal Pradesh University, for enlightening us with his logic and ideologies on research methodology, report writing, anti-plagiarism tools. सर का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने अब तक 15 बुक्स पब्लिश किए हैं, जिसमें कि एक बुक्स का उन्होंने अभी तक हम लोग को बताया भी, रिसर्च मैथोडोलॉजी इन द सोशल साइंसेस, और ये 2021 का ही है। और सेकेंड, इन्होंने मोर देन 106 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, और बुक्स रिव्यू और क्रिटिकल एसे भी इन्होंने लिखा है। और ये ऑलरेडी एडिटर हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटीज के जर्नल्स के, और रिसर्च प्रोजेक्ट भी इन्होंने ICSSR में किया भी है। ही इज द वेरी डिप्लोमेट पर्सन इन द एजुकेशनल सिस्टम। तो सर, आपका जो टॉपिक रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिपोर्ट राइटिंग, बहुत क्लियर कर, जहां गैप होता है लोगों में, ऐसा रिसर्च जो कराते हैं या फिर करते भी हैं, तो दोनों में जो गैपिंग है उन्हें बहुत बेटर आपने फाइंडिंग करके बताया है, जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। और साथ में प्लेगरिज्म टूल्स में कैसे क्या हम लोग लैकिंग कर देते हैं कि रिजेक्ट हो जाता है, या जर्नल्स में या फिर रिसर्च पेपर में, तो ये भी आपने फाइंडिंग किया है। तो जो परमिशन है ऑलरेडी वो 10% तक टॉलेबल है, उसके बाद हम लोग रिजेक्शन में चले जाते हैं। तो ये सिस्टम से आपने सर बहुत कुछ क्लियर किया है, जो जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जो अंदर में अपना PhD स्टूडेंट्स को कराएंगे उनके लिए भी आपने काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम क्लियर कट आपने ट्रांसपेरेंट लेवल में आपने किया। आपका बुक्स जो रेफर किए हैं वो काफी 2021 का लेटेस्ट एडिशन है सर, इसलिए 2021 है सर। जी सर। तो ये आपका सर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर सच। बस मेरा लास्ट में अभी सर लास्ट में बस एक छोटा सा अपील है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जर्नल अभी ये UGC लिस्ट के लिए हमने भेजना है, लेकिन पेयर रिव्यूड जर्नल है। एक UGC लिस्ट ने हम लोगों के दिमाग में खता कर दी है, दिक्कत कर दी है कि भाई अगर हम UGC लिस्ट में छपेंगे तो नंबर मिलेंगे। जी। UGC की नोटिफिकेशन पढ़ें, उसमें ऐसा कहीं नहीं है। दे हैव रिटन कि भाई इधर इट शुड बी इन UGC लिस्टेड और इट शुड बी पीयर रिव्यूड। और पीयर रिव्यूड अगर पीयर बोर्ड अच्छा है तो आपके जब भी स्क्रूटनी होती है एसोसिएट की या प्रोफेसर की, तो स्क्रूटनी कमेटी को दम चाहिए, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कन्विंस करने के लिए दम चाहिए, तो आपको नंबर मिलते हैं। इवन देन अगर UGC अपनी लिस्ट में किसी जर्नल को नहीं लेती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना लिखना हमने छोड़ना है, काम चलते रहना चाहिए। वो जर्नल बंद नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से जर्नल्स के पीछे बहुत सा अच्छा लिटरेरी और एकेडमिक स्पिरिट होता है, लेकिन कुछ कारणों से उसके बहुत से पैरामीटर्स हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जर्नल में पिछले 3-4 सालों से एडिट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी HP में गूगल करके अगर पेपर भेजना चाहें तो भेजें। बस उसमें आपको गूगल में उसकी स्टाइल शीट मिल जाएगी। हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जर्नल की अपनी स्टाइल शीट बनाई है, तो वो दैट इज गोइंग क्लोज टू शिकागो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस। स्टाइल शीट्स कोई हवा नहीं है, इतना याद रखिए। आप जो मर्जी फॉलो करें, आप अपनी मेथोडोलॉजी में लिख लें कि आपने शिकागो फॉलो की है, आपने APSA की है, आपने APA की है, आपने MLA की है, मेथोडोलॉजी में करें आप जिक्र उसका। तो जो आपको अच्छा लगे, कोई ये भारत के संविधान में नहीं लिखा कि हमने शिकागो इस्तेमाल करनी है। इट इज अप टू यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगर